हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या गाइस, इससे पहले मैंने व्हाट डू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आज बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। 10 मार्क का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए। बात करते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का ये नोट्स है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं आपको वेरी रीजनेबल रेट में सारे के सारे पीडीएफ जो है नोट्स के शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ। सबसे पहले आंसर देखिए, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। नंबर 2, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डाटा। नंबर 4, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। नंबर 5, रिव्यू ऑफ की फैक्टर्स, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। नंबर 7, इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस। एंड नंबर 8, फॉलो अप। तो इसका डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार से इसका डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से ये जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं इसके तरीके से प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव फिगर, दीज आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। नंबर 1, defining the problem. There is sufficient time should be spent on defining the problem, as it is not always easy to define the problem and to see the fundamental things that is causing the trouble and that needs correction. Number 2 देखिए, analyzing the problem. After clearly recognizing the problem, the next phase of decision making is the analysis of problem, which involves classifying the problem and gathering information. Classification is necessary in order to know who should take the demon and who should be consulted in taking it. Number 3 is collection of data. A lot of information is required to classify any problem. Full stop. So long as the required information is not available, any classification would be misleading. Full stop. This will also have an adverse impact on the quality of the decision. Full stop. Trying to analyze without facts is like guessing directions at a crossing without reading the highway sign board. Thus, collection of right type of information is very important in decision making. Full stop. It would be an extrapolation to say that a decision is as good as the information on which it is based. चौथा देखिए, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो रिक्वायर सर्टेन डिसीजंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर. फर्स्ट ही मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ information he requires and how he can obtain this. First, before gathering the information, one must be clear to how much time, money he can spend in gathering the information he needs. उसके बाद देखिए नंबर 4, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स. आफ्टर डिफाइनिंग द एनालिसिस द प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. फर्स्ट, विदाउट रिस्टोरिंग टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, a manager is likely to guide by his limits imagination. It is rare for alternatives to be lacking for any course of action. Unless he does so, he cannot reach the decision which is the best possible. Number 5 देखिए, रिव्यू ऑफ की फैक्टर्स. While developing alternatives, the principle of limiting factor has to be taken care of. A limiting factor is one which stands in the way of accomplishing the desired goal. Number 6 देखिए, selecting the best alternative. In order to make the final choice of the best alternative, one will have to evaluate all the possible alternatives. There are various types of evaluate alternatives. The most common method is through intuition, choosing a solution that seems to be good at the time. That is an inherent danger. It is the process because a manager's intuition may be wrong or several occasions. और बाकी का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंप्लीमेंटेशन, द डिसीजंस, फॉलो अप वगैरह। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, MIS DSS के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।